Genitourinary tract master pass paper 2, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. What is the appropriate method of evaluating the site of a sentinel node? The 20 to 40 MPQ of nanocolloid injected subdermally is the quadrant of breast where the cancer is located. ठीक है? ये जितने भी ऑप्शन है उसमें से सिर्फ ये ऑप्शन कहता है कि जो इन द क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट वेयर द कैंसर लोकेटेड, जिस सेंस पढ़ रहा है कि जब अपने जहाँ पर आपने कैंसर देखना है तो वहीं पर आपने इंजेक्शन में लगाना है 20-40 MPQ. बाकी सारे ऑप्शंस मिसलीडिंग है. अगर देखना चाहती है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. A 39-year-old female with breast cancer detected on screening. So what is the appropriate method of evaluating the site of sentinel node biopsy? तो पहला आंसर है, ठीक है. फिर दूसरा 20 to 40 MPQ इंजेक्टेड सबडोमिनली इनटू इप्स लैटरल एक्चुअली ये भी चांस नहीं बन रहा क्योंकि उसी क्वार्टर में तुम्हें इंजेक्ट करना है जहाँ पर कैंसर है. फिर सी जो अल्ट्रासाउंड कैरिड मेथनिन जो इंजेक्टेड टू द मोस्ट प्रोमिनेंट नोड इप्स लैटरल एक्सिला ये भी चांस नहीं बन रहा क्योंकि ये भी नहीं कह रहा है कि जो एग्जैक्टली कैंसर लोकेटेड. इंजेक्टेड ऑफ रेडियो लिबरेट 20 MPQ ऑफ मेथनिन बूस्ट ये भी नहीं है कि इसमें ये याद रखना है कि नैनोक्लाइड इंजेक्ट करेंगे और 20 to 40 MPQ और इन द क्वाड्रेंट वेयर कैंसर लोकेटेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Chronic primary adrenal insufficiency. CT scan shows small adrenal gland with calcification bilaterally. What is the most likely diagnosis? Previous tuberculosis infection. ठीक है. जब adrenal gland में calcification होती है तो उसके अपने डिड्यूज होते हैं. अच्छा ये sentinel node है, ये ब्रेस्ट में sentinel node है. ठीक है. ये पहले ठीक है. ये दूसरा है कि जो है ये लेफ्ट साइड पर आप नजर आ रही है एड्रिनल ग्लैंड कैल्सिफाइड है. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों एड्रिनल ग्लैंड जब कैल्सिफाइड हो इसी तरह तो प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसकी वजह होती है. अच्छा इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर पढ़ ले तो क्वेश्चन नंबर calcification occurs in 25% of Addison's disease caused by TB. Other causes of chronic pulmonary adrenal insufficiency include idiopathic atrophy from autoimmune disorder, fungal infection. ठीक है. लेकिन कॉमन TB है. बाकी कोई ऑप्शन सेंस बनना अगर देखें तो idiopathic adrenal atrophy, pyramidal metastatic disease, ganglioneuroma and pyroglomeruloma. Ganglioneuroma pyroglomeruloma कैंसिल करें क्योंकि उसमें कैल्कुलेशन बिल्कुल नहीं होती है. फिर बस ये बायलैटरल जब कैल्कुलेशन होता है तो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली है. ठीक है. प्यूकोसाइटोमा शायद यूनिलैटरल कैल्कुलेशन होगी लेकिन मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस है. क्वेश्चन नंबर 3. प्रीवियस सर डायग्नोसिस डबल वॉइस. जी एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस डबल आ रही है. अच्छा एक मिनट. दूसरी डबल आवाज बहुत आहिस्ता होगी ना. अभी ठीक हो गया. जी सर. Question number 3. Previous diagnosis of medullary thyroid cancer and hyperparathyroidism. MRI shows adrenal lesion, most likely radiological finding. ISO intense slash hyperintense to liver on T1 weighted images and very hyperintense to spleen on T2 weighted images. ठीक है. आवाज ठीक है ना. आवाज डबल तो नहीं है ना. जी सर. अच्छा ठीक है. नो सर. अब ये जी कह रहा सर. है previously diagnosis of medullary thyroid cancer and hyperparathyroidism. ये सारे diagnosis है multiple endocrine neoplasm के. ठीक है. फिर इसमें adrenal lesion है मतलब pheochromocytoma है. So where is the most likely radiological findings of pheochromocytoma? तो ये isointense to such hyperintense to liver. इस इमेज देखते हैं आसान है. ये isointense ये pheochromocytoma है adrenal lesion. isointense to liver on T1. ठीक है. और T2 it's hyperintense, more hyperintense than spleen. ठीक है. तो ये कह रहा है कि जो है T1 में isointense to liver on T1 में imaging and pheochromocytoma is hyperintense to spleen on T2 weighted images. तो ये MCQ भी कह रहा है. देखो isointense slash hyperintense to liver on T1 weighted images and very hyperintense to spleen on T2 weighted images. Pheochromocytoma है. ठीक है. Question number 4. CT scan width of the following appearances of the adrenal gland are expected and would require further evaluation. ठीक है. Width of the adrenal limb measured 2 cm, not length. ठीक है. अब ये है कि साइज जब बड़ी हो जाए तो अनएक्सपेक्टेड है और एड्रेनल ग्लैंड की जो विड्थ है मैक्सिमम मेरे ख्याल 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम होना चाहिए.
जब 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ जाए तो बस ये याद करें कि width of the adrenal gland measures 2 centimeters, so it's abnormal, ठीक है। अगर इसके एक्सप्लेन पर थोड़ा सा तो कुछ पता चलेगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर याद करें करो। The normal width of adrenal gland is less than 1 centimeter, ठीक है। Normal width of adrenal gland less than 1 centimeter, and when it measures 2 centimeter, then it means that required for the evaluation, मतलब malignancy के लिए, ट्यूमर के लिए वर्कअप करें। अच्छा, next question number 5. Bilateral testicular masses and precox puberty. Which of the following are most likely radiological findings? Bilateral diffuse enlargement of the adrenals but preservation of the usual morphology, ठीक है। क्योंकि डायग्नोसिस है congenital adrenal hyperplasia और इसमें precox puberty भी होती है बेबी में। तो जो है इसमें ये कि diffuse enlargement of adrenal gland लेकिन preservation of the usual morphology। और पूरी MCQ पढ़े वही थी, तो हमें कुछ पता चले कि क्या पूछ हिस्ट्री है। 55 question 5. A 9-year-old boy, ठीक है। A 9-year-old boy presents to the endocrinology team with bilateral testicular masses and precox puberty. Which of the following are the most likely radiological findings? So bilateral diffuse enlargement of the adrenal but preservation of the usual morphology, congenital adrenal hyperplasia. इसमें क्या होता है? bilateral testicular masses and precox puberty होती है। अच्छा, अगर इसमें हम तो इमेज देखें तो याद रहे ये congenital adrenal hyperplasia है, ठीक है। Bilateral diffuse enlargement of the adrenal glands but preservation of their morphology. ओके, अभी आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. 2-year-old boy with abnormal mass, ठीक है। Ultrasound shows a large hyperacute heterogeneous mass on the right extending across the midline and with areas of acoustic shattering, ठीक है। The right kidney could not be clearly visualized. CT scan, most likely radiological finding is heterogeneous mass in the right kidney extending across midline and right kidney could not be visualized. So CT scan most likely radiological finding is heterogeneous solid mass with low density areas and calcification displaying the right kidney and encasing the inferior cavity, ठीक है। ये diagnosis है neuroblastoma की, ठीक है। It has calcification, it displays the right kidney and encases the inferior cava. दूसरे ऑप्शन में क्रॉस साइन आते हैं, लेकिन क्रॉस साइन नहीं है क्योंकि क्रॉस साइन शोज नेफ्रोब्लास्टोमा, विलियम्स ट्यूमर जो होती है, ठीक है। अब अच्छा फिर इसकी इमेज देखते हैं एक मिनट। large hyperacute heterogeneous mass on the right extending across the midline with acoustic area sharing right kidney could not be visualized. अच्छा, फिर इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये विलियम्स ट्यूमर है एब्डोमिनल और ग्राफ पर फ्रंटल व्यू, तो ये बीन शेप्ड लेजन है, ठीक है। लेकिन सीट स्कैन देखते हैं। ये विलियम्स ट्यूमर है, ठीक है। लार्ज मास है लेकिन इट डज नॉट इंक्रीज अॉर्टा। इसमें एक न्यूरोब्लास्टोमा भी था। हाँ, ये न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है। ये न्यूरोब्लास्टोमा नजर आ रहा है। लार्ज मास इन द लेफ्ट किडनी, ठीक है। शोज इंटरनल कैल्सिफिकेशन एंड इट इंक्रीज द इंफीरियर वेना केवा। देखो इंफीरियर केवा नजर नहीं आ रहा और इट क्रॉसेस द मिड लाइन, ठीक है। तो ये फीडर से न्यूरोब्लास्टोमा की। और इसके अलावा जो विलियम्स ट्यूमर है, इट does not show internal calcification, it does not increase the inferior vena cava, और it does not cross midline, it pushes the inferior vena cava। लेकिन ठीक है, अब तो ये कह रहे थे कि heterogeneous solid mass with low density areas and calcification displaying the right kidney and increasing the inferior vena cava. Question number 6. Yes, 2-year-old boy presented to the pediatric with abdominal mass, ultrasound temperature, large hyperacute heterogeneous mass, right extending across the midline, ठीक है। तो ये है आंसर है सी, heterogeneous solid mass with low density areas and calcification। अच्छा भाई, कोई ऑप्शन सेंस नहीं पढ़ना, कोई ऑप्शन खुद पढ़ लो और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछे, ठीक है। Question number 7. Neuroblastoma is diagnosed, ठीक है। Which of the following radiological findings would be indicate that the lesion could not be removed surgically? Involvement of the inferior vena cava, ठीक है। ये common sense है कि जब involvement करते हैं inferior vena cava को, cannot be removed surgically। Question number 8. CT scan shows the heterogeneous left adrenal mass measuring 12 cm, which contains calcification and has delayed washout characteristics. What other condition associated with the most likely diagnosis? Astrocytoma, ठीक है। इसमें ये कि डायग्नोसिस बैकवर्ड मीट वैन सिंड्रोम है,
कुछ में रीनल सेल कार्सिनोमा होती है और एस्ट्रोसाइटोमा होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, CT scan shows a heterogeneous left atrial mass measuring 12 cm, which contains calcification and has delayed water characteristics. पूरी MCQ पर question number 8. A 60-year-old female patient undergoes CT examination and is incidentally found to have a heterogeneous left atrial mass measuring 12 cm, which contains calcification and has delayed water characteristics. Biochemical endocrine testing is negative, but other conditions associated with the most likely diagnosis. ये एस्ट्रोसाइटोमा 8, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. The patient is asymptomatic negative endocrine testing and has a large mass with delayed washout, which are all consistent with diagnosis of adrenal cortical carcinoma. ठीक है, adrenal cortical carcinoma. Of these, 30% are calcified and the calcification of enlarged size or suggestive of malignancy. Adrenal cortical carcinoma is associated with hypertrophy, Paper1 median syndrome, and astrocytoma. ठीक है, pheochromocytoma is associated with MEN2 and neurofibrous adrenal cortical. अच्छा, तो जब आपको कह रहा है कि the patient has left atrial mass measuring 12 cm and considered calcification, तो adrenal cortical carcinoma diagnosis होगी, ठीक है। फिर what is associated with? It is associated with Paper1 median syndrome, renal cell carcinoma, and astrocytoma. तो यहाँ पर ऑप्शन में astrocytoma तो वो diagnosis, वो आंसर है, ठीक है। Question number 19, intracapsular rupture of implant, breast implant. What investigation would be most sensitive? T2 weighted fast spin echo MRI sequences, ठीक है। ये जो इंट्राकैप्सुलर रप्चर है, इट कैनॉट बी डिटेक्टेड ऑन मैमोग्राफी, इसलिए मैमो नहीं करते, इसके लिए MRI करेंगे, T2 weighted fast spin echo MRI sequence, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलेगा, देखो मेमो नहीं है, ठीक है, एमोलो नहीं है, बेस्ट अल्ट्रासाउंड भी नहीं करते, बेस्ट है MRI सीक्वेंस, T2 weighted fast spin echo MRI सीक्वेंस, ठीक है। T2 पर हमें फ्लूइड नजर आएगा। अच्छा, एक्सप्लेन पढ़ते हैं। Intracapsular ruptures are not detectable on mammography because the silicone is contained within the fibrous capsule and that forms around the implant, ठीक है। Extracapsular rupture may sometimes be detected on mammography, but may also be obscured by the online implant, ठीक है। और low sensitivity but similar specificity than MRI indicated implant, ठीक है। फिर the fibrous capsule surrounding implant is hypertense or T2 and silicone and saline both display high signal T2, ठीक है। The most effective sequence in evaluating implant and inversion recovery is suppressive fat with additional suppression of water for pure detection of silicone and additional suppression of silicone for pure depiction of saline component, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि जो है इन सब में बेस्ट T2 weighted fast spin sequence MRI sequences बेस्ट है फॉर इंट्राकैप्सुलर रप्चर। MRI भी नहीं, सिर्फ MRI भी ठीक नहीं है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक नहीं है, और वो जो है मेमो भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, पाइलोइड ट्यूमर, व्हाट इज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट डीजनरेशन? 5 to 10%, ठीक है। इस तरह याद करें कि परसेंट कॉल बैक 5, 10, 15 याद करें तो 5 to 10% इज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट डीजनरेशन ऑफ पाइलोइड ट्यूमर, 15% इज रिस्क ऑफ पोर्सिन GB टू फॉर्म गॉल बैडर कार्सिनोमा,